afternoon to all the teachers, our principal and vice principal. Actually, we are today just going to start in-house training for competency-based education. My RP code is 8653. 8653. Competency-based education. As the topic says, this type of education is not like the rote learning as earlier we have done. We are not going to memorize, we are not going to just remember or recite, but students should understand the concept, clarify the concept, understand the meaning, so that they can apply it into the natural world, into the real world. Otherwise, what happens? होता ये है, चेंज कर दिए। इसमें कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट हमको नजर आना चाहिए। वरना रॉट लर्निंग में क्या है कि आदमी सिर्फ पढ़ लेता है, सुन लेता है, सीख लेता है और उसी चीज का डेफिनेशन पूछा जाए तो उस चीज को सीधा सीधा बता देता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको रियल वर्ल्ड में जैसे ही फेस करने को मिलता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है कि कॉमर्स का एक स्टूडेंट कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसको पता नहीं है कि वो किस तरह से अकाउंट्स को टैकल करे, इसलिए कि प्रैक्टिकल उसका नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली उसने इस चीज को नहीं देखा। और कॉलेज में रॉट लर्निंग सिस्टम में मेमोराइज करके डेफिनेशंस को या फिर उसके जो तरीके हैं जो कुछ भी है उस चीज को सिर्फ इस तरह से समझा है कि रियल वर्ल्ड से उसका कोई नाता नहीं है, जिसकी वजह से उसको वहां काम करने में बहुत परेशानी होती है। अब उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 1-2 साल तक उसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब उसके बाद वो आगे इंडस्ट्री के लायक बन सकता है या कंपनी के लायक बन जाता है, फिर वो काम करता है। तो अब एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम रियल वर्ल्ड को फेस कराते हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स, आजकल क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं एनईपी 2020 के मुताबिक, अब क्वेश्चंस भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के आने शुरू हो गए हैं। पहले मैथमेटिक्स में जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आता था कि 2x + 3y = 4 and 5x + 6y = 9, then find the value of x and y। अब हम लोगों ने भी जो सिस्टम से पढ़ा है उसमें यही चीज पढ़ा, हम x और y का वैल्यू निकाल देते थे, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता था कि आखिर में हम कर क्या रहे हैं। और इस चीज को अगर अप्लाई करना हो रियल वर्ल्ड में जाकर के तो हम कैसे अप्लाई करें। हालांकि क्वेश्चन इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे बुक में भी पाया जाता था पहले भी, जैसे कि द कॉस्ट ऑफ 2 balls and 1 bat is 300 rupees and the cost of 5 balls and 6 bats is 2000 rupees, then find the cost of 1 ball and 1 bat। अब ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है क्या? 2x, एक बॉल का कीमत अगर x रुपया है तो 2 बॉल का 2x हो गया, वही चीज को लिख दिया वहां पर 2x। 3y लिखा है, एक बैट का कीमत y रुपया है तो 3 बैट का 3y हो गया, टोटल पैसा कितना दिया उस चीज को बगल में लिख दिया। तो इस चीज को समझते हुए कि रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन कहां है, सिर्फ ये नहीं कि मेमोराइजिंग सिस्टम से ही हम समझें, तो क्या होता है, ये हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चीज मिलती है और हम फिर इसको सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अभी जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से हमारी अभी पढ़ाई चल रही है, इसमें अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के बाद भी निकलता है तो उसे इंडस्ट्री में जाने के बाद ये नहीं पता चलता कि हम इस काम को कैसे करें, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो किसी का हो, किसी किसका हो। लेकिन अब उसको वोकेशनल टाइप की ट्रेनिंग से इस तरह से जोड़ दिया जा रहा है और शुरू से ही क्लास 1 से ही हम उसको इस तरह से पढ़ाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड तरीके से कि उसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। There is quite a revolution at work in education that started over 25 years ago। 2002-2003 में उसी वक्त एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इस टाइप का कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, आदमी को समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ रटी हुई चीज हो। New directions for learning and being advocated
in all levels and types of education. नए डायरेक्शन जो है लर्निंग को मिलेगा, सीखने को एक नया डायरेक्शन मिलता है एंड बीइंग एडवोकेटेड और उसके लिए एडवोकेसी की जाती है हर सब लेवल पे, क्लास 1 से लेके नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक। और टाइप्स ऑफ एजुकेशन में अलग अलग टाइप्स के एजुकेशन में भी नए डायरेक्शन और नई लर्निंग का तरीका निकाला जाता है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ये क्या करेगा, ये अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को बढ़ाएगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी होगी इसकी। इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी का डिमांड और ज्यादा हो जाएगा, जिस चीज का रिस्पांसिबल आना है। A major focus is a competency based approach to all levels and types of education, चाहे वो जिस लेवल पे हो, जिस सब्जेक्ट से हो, जिस ब्रांच से हो और जिस टाइप का एजुकेशन हो, जिस क्लास का हो, सबको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया जाएगा। ज्यादा फोकस किधर रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड में, यानी कि उससे हमको कुछ फायदा होना चाहिए, सिर्फ लर्निंग नहीं होनी चाहिए हमारी या मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग, कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंसी मींस रिजल्ट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस होगी और कॉम्पिटेंस होगा एक दूसरे से, तब जाकर के ये कॉम्पिटेंसी में चेंज होता है। मींस इसको ये दिखा रहे हैं कि दिस इज हाउ मच रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस एंड हाउ मच रिलेटेड विद द कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट स्लाइड। Competency, focus on an individual ability to perform activities related to work. एक ही इंडिविजुअल पे, हर इंडिविजुअल पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे ताकि वो उसके अंदर परफॉर्म करने की एबिलिटी हो आए, एक्टिविटीज को करने की एबिलिटी है, किस चीज से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, लाइफस्टाइल स्किल्स उसके अंदर आए और लर्निंग उसके अंदर आए। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंस डिस्क्राइब्स actions or skills the person should be able to demonstrate. किस टाइप का एक्शन? So ये ऊपर में जो लिखा है focus on individual ability to perform activities related to work, lifestyle skill और learning। हम लोग जब पढ़ाते हैं ऐसे टीचर, हम लोग तो उसका लाइफस्टाइल स्किल में क्या डेवलप करेंगे या फिर क्या कॉन्फिडेंस लाएंगे। काम में तो समझ गए कि उसको पढ़ाना है, उसको होमवर्क बनवाना है, वो अगर उसका अगर समझ में नहीं आता तो समझाना है, लर्निंग में उसको सिखाना है, या फिर ये लाइफस्टाइल स्किल वाला थोड़ा सा। लाइफस्टाइल स्किल्स में एथिक्स आते हैं, उसके मैनर्स आते हैं, तौर तरीका आता है कि किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। और लर्निंग में तो सीखना है और रिलेटेड टू वर्क, वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक। ये तीन चीजें। मींस उसका ह्यूमन बिहेवियरल नेचर कैसा है, ये चीजें लाइफस्टाइल स्किल्स हैं। Competence describes actions or skills the person should be able to demonstrate. वो एक्शन डिस्क्राइब करना पड़ेगा, स्किल डिस्क्राइब करने पड़ेंगे हमें, ये चीजें कॉम्पिटेंस, ताकि वो डेमोंस्ट्रेट करने के लायक हो जाए। साइकोमोटर से रिलेटेड है ये, इट इज रिलेटेड टू द हैंड एंड लेग्स एंड ऑल, रिलेटेड टू साइकोमोटर्स। कॉम्पिटेंस इज कंसर्न्ड विद परसीव्ड स्किल्स, इससे कंसर्न नहीं है क्या हमने फील किया है, कौन सा स्किल हमारे अंदर परसीव हो गया, फील कर लिया हमने, उससे रिलेटेड है। एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, और इसको इस फीलिंग को हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज़ दीस आर नॉट द मेजरेबल क्वांटिटीज, because these are not measurable quantities. Performance relate to specific behaviors that are measurable and can reflect what workers actually do. Performance किस चीज से रिलेट करता है, ये एक खास बिहेवियर से रिलेट करता है जिसको हम मेजर कर सकें। Competence को मेजर नहीं कर सकते हैं तो performance is not measured, so it is not related to the competence that are measurable and can reflect that workers actually do. क्या वर्कर क्या कर रहे हैं उस चीज को सामने आना चाहिए, वो चीज को रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE is focused on outcome. इसका मेन ध्यान कहाँ होता है, क्या नतीजा इसका निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, इसी चीज के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, that are linked to workforce needs, कि पूरे वर्कर लेवल्स को, वर्कर्स को या जो भी इस एक्टिविटी को कर रहे हैं उन लोगों को क्या चीज की जरूरत है, एज डिफाइंड बाय एम्प्लॉयर्स एंड द प्रोफेशन। जैसा कि एम्प्लॉयर्स ने या प्रोफेशन ने उस चीज को डिफाइन कर दिया है, इस एक्टिविटी में ये चीजें रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें जो रिक्वायरमेंट है वो चीजें उनसे लिंक होना चाहिए, लिंक टू वर्कफोर्स नीड्स।
नेक्स्ट स्लाइड। Competency based education is defined as an instructional system. ये एक सिस्टम है इंस्ट्रक्शन का, in which a performance based learning process is used. जिसमें हर लोगों का परफॉर्मेंस को देखा जाता है, स्टूडेंट्स हो या वर्कर्स हो या लेबरर्स हो, जो भी हो, एक लेवल पे उनका परफॉर्मेंस को देखा जाता है और रिजल्ट देखा जाता है कि हाउ द रिजल्ट आउटकम इज कमिंग आउट। Competency based education is a combination of the knowledge, इन चीजों को मिलाकर ये बनता है, ये नॉलेज होना चाहिए, एटीट्यूड्स जो एथिक्स है वो चीजें होनी चाहिए, एंड स्किल्स, और उसके बारे में उसको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, नेसेसरी टू मीट अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। एक खास स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होने चाहिए, एटीट्यूड सही होना चाहिए और उस चीज का नॉलेज अच्छी तरह होना चाहिए, तब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है। ये गैरी ने 2002 में कहा। नेक्स्ट स्लाइड। Need as an evidence that anyone who completed degree or course, हमको क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन नीड्स, क्या नीड है इसको? एक सबूत चाहिए that anyone who completed degree or course, जिस चीज को कोई भी कंप्लीट कर सके। There is disconnection between education and real world, है ना? एजुकेशन वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, टू डेवलप एसेंशियल परफॉर्मेंस स्किल्स, इससे हम क्या करते हैं? एक एसेंशियल जरूरी परफॉर्मेंस स्किल हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, इसको जोड़ करके एक साथ करके। प्रिपेयर लर्नर्स टू फंक्शन, लर्नर्स को हम प्रिपेयर करते हैं इस तरह से वो काम कर सके और सक्सेसफुल हो सके। एक्रेडिटिंग एंड रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स, वो रेगुलेटरी ग्रुप जो लॉ और कानून को बनाती है, प्रोफेशनल ग्रुप जो इसको कंडक्ट करते हैं, व्हाट एश्योरेंस उनको क्या चाहिए? ये एश्योरेंस चाहिए कि कंप्लीशन ऑफ एन एजुकेशन लेवल, वो चीज सही से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब थोड़ा कुछ एक्टिविटी हम देते हैं आप लोगों को करने के लिए 10-15 मिनट की। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जितनी भी जो सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें जो आपको अपने बुक में लगती हैं कि ये चीज जो है ये रॉट लर्निंग है, लेकिन इसको इस तरह से किया जाए, ये क्या किया जाए तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, जैसा कि मैथ्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप लोग इसमें लिखेंगे अलीगढ़ में। एक क्वेश्चन एक्टिविटी से पहले एक क्वेश्चन, हां बोलिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस, क्या ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में शामिल है? सेंस ऑफ माइंड नहीं समझ में आया, कॉमन सेंस तो हमें समझ में आ गया। कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ माइंड बात समझ में नहीं आई सर। कॉमन सेंस समझ में आ गया। कॉमन सेंस इज दैट सेंस सिचुएशनल सेंस, सिचुएशन के हिसाब से अपने हाँ, माइंड को लगाना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल रहे, सेंस ऑफ माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यस, दैट इज रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इसलिए कि अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या होके चला गया। रूट लर्निंग एजुकेशन बेस्ड में, हाँ, जैसे एक छोटा सा इसको चुटकुला कह लें या जो कह लें, हाँ, एक बंदा घुमाइए सर की तरफ, घुमाइए जरा, अच्छा रहेगा, लेकिन मत घुमाइए, पहले दीजिए। पहले मैंने कहा आप इधर आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए। नहीं, ठीक है कि एक बंदा जाता है अमेरिका इंजीनियरिंग करने, हाँ, और वहाँ से वो इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आता है और साधारण किसान का बेटा होता है। वह किसान अपना सारा खेत दौलत जमीन बेच करके उसको अमेरिका से इंजीनियरिंग करा करके बुलाता है, डिग्री दिलवा देता है, इंजीनियर हो जाता है। और जब वह आता है अपने घर देहात में, रूरल एरिया में, तो एक मंदिर के पास सुबह ऐसे टहल रहा होता है, तो मंदिर के पास वो खड़ा होता है और वहाँ एक झंडा लगा होता है बहुत लंबा सा, मंदिर पे आप देखे होंगे कि बड़े से बांस में झंडा लगा होता है। वह खड़ा होकर के और वहाँ देखने लगता है, कभी नीचे देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी ऊपर देखता है। तो वहाँ से गुजरने वाले गांव के लोग वहाँ रुकने लगते हैं कि भाई ये अमेरिका से इंजीनियरिंग करके आया है, लग रहा है कुछ खास चीज़ बताने वाला। धीरे धीरे करते करते वहाँ 100, 200, 500 की भीड़ हो जाती है कि भाई अमेरिका का इंजीनियर आया, लग रहा है कुछ बताएगा। ऐसे ही करते करते जब भीड़ होती है तो उसके फादर को भी बुलाया जाता है कि भाई पता नहीं आपका लड़का 2.5 घंटा से क्या ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ बता भी नहीं रहा। तो उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि बाबू क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? तो कहता है कि हम 2.5 घंटे से ये सोच रहे हैं
कि आखिर ये इतने लंबे बांस पर उतना ऊंचा बिना किसी सीढ़ी के चढ़ के झंडा लगाया। बात समझ में हाँ। तो उसको ये कौन सिखाएगा, कौन सा एजुकेशन सिखाएगा कि उस बांस को नीचे रख के झंडा लगा के तब बांस खड़ा किया गया? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से आता है। वही पूछ रहा हूँ कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ये चीज बताएगा? ये चीज बताएगा, ये सेंस डेवलप करेगा। इसलिए सेंस डेवलप करने के लिए जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, माने बाहर के वर्ल्ड से एक्सपीरियंस के लर्निंग के थ्रू ही हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए सर, सेंस तो होना जरूरी है। और नॉन सेंस सेंस तो होना ही चाहिए। और दूसरा चीज क्या कहता आपने? सेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। कॉमन सेंस नहीं हुआ आदमी, अगर कॉमन सेंस नहीं होने की वजह से ही तो वो चीज देख रहा है कि ये इसको कैसे वहां चढ़ करके ये लगाया है। कॉमन सेंस डेवलप होता है कैसे? हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही कॉमन सेंस डेवलप होता है। अगर वो इस चीज को पहले देखा होता तो फिर ऐसा सवाल नहीं, या ऐसा कभी अपनी जिंदगी में किया होता। इससे साफ पता चल रहा है कि उस आदमी ने कभी भी इतने बड़े झंडा, इतनी बड़ी लाठी में झंडा कभी नहीं लगाया है, ना कभी किसी को लगाते हुए देखा है। उसको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, केवल उसने डिग्री ली, सिर्फ डिग्री ले ली। रोड लर्निंग। गुड सर, हाँ रोड लर्निंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा। और भी क्वेश्चन पूछिए सर। नेक्स्ट स्लाइड है भाई, ये तो दिखाया है, अच्छा नहीं। नीड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी ज्यादा होना चाहिए इसमें। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में क्या जरूरत है इसमें, ये बता रहा है। जिम्मेदारी होनी चाहिए फॉर द कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट बचाने के लिए और टाइमिंग बचाने के लिए। हायरिंग ऑफ न्यू वर्कर्स, नए वर्कर्स को हायर करने कंपनीज करती हैं। फॉर एक्सटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम, ज्यादातर लर्निंग प्रोग्राम के लिए ये जरूरत है। रेगुलेटरी, लीगल, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मेजर्स, ऐसा नहीं है कि हम कानून और लीगल चीजों को नहीं देखें, उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, बाहर के स्टैंडर्ड क्या हैं, किस तरह से बाहर के लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ किस लेवल पे काम हो रहा है, इस चीज को देखना है। एंड क्वालिटी मेजर्स रिक्वायर डेमोंस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ये कॉम्पिटेंसीज का डेमोंस्ट्रेशन दिखाता है। हमारे यहाँ ही बहुत सारे स्कूल्स हैं इससे पहले, जैसे कि लामार्ट्स हो गया, या और भी है डॉन बॉस्को है, और भी दूसरे स्कूल्स हैं जो हम लोगों के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से निकले हैं। आप देखिएगा उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग ही था। ठीक है, जैसे आप सेंट स्टीफन है और सेंट जेवियर्स है, इन लोगों के उस टाइम के स्टैंडर्ड में हमको नजर आता है कि इन लोगों ने ये सब चीजें अप्लाई कर दी थी, इसलिए कि यूएस में ये चीज अप्लाई हो गया। तो इसमें मेन बताना यही है कि एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है उस चीज को बहुत सारे इंडिया में स्कूलों ने पहले से ही अपना लिया था, लिटरेरी वे में, कल्चरल वे में और डांस, म्यूजिक, इन सब वे में कुछ न कुछ तरीके से इन लोगों ने अपना करके रखा था ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है इसमें, जरूरत है इसकी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है, तब वो चीज हम उस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस में ले जा पाएंगे। जब हमारा प्रोफेशनल डेवलप नहीं है तो हम उस चीज को नहीं समझा सकते ये कैसे करना है। टू एडवांस देयर कैरियर्स एंड कैरियर्स, डबल आर आई ई आर एस नहीं होना चाहिए था, टू एडवांस देयर कैरियर्स, हां कैरियर होना चाहिए। मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनका कैरियर आगे बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन को सही कंट्रीब्यूशन वो दे पाए, डेवलपमेंट दे पाए, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव डेवलपमेंट दे पाए। इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम है ये, नॉट ओनली इन एजुकेशन बट आल्सो इट इज आल्सो अप्लाइड इनटू द इंडस्ट्रीज। आगे कितना स्लाइड हुआ सर? हां कितना हुआ नंबर? Purposes, क्या मकसद है इसका? It helps in instructing students by examples. एग्जाम्पल देंगे तभी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आएगा, वरना नहीं आएगा। To understand skills when performing to the standards required in employment. काम में जो स्टैंडर्ड हमको रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए, तो उस चीज के स्किल को ये समझता है कि वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा स्किल लेने चाहिए। To provide nursing care that clients require. ये हॉस्पिटल के केसेस आगे आएंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे। सेफ्टी एंड कॉम्पिटेंसी टू इंश्योर द रिस्पांसिबिलिटीज नेसेसरी फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को आजकल कंपनीज भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है
सेफ्टी एंड कॉम्पिटेंसी। सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए हर लेवल पे ताकि किसी की जान नहीं जाए, कोई मरे नहीं उस एक्टिविटी में, और जब एक्टिविटी तैयार करें तो उसी वक्त पता कर लेना चाहिए पहले से ही हमें कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर एक्सीडेंट कैन हैपन और एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट कैन हैपन। इसलिए सेफ्टी मेजर्स पहले से ही लेना चाहिए। इंश्योर द रिस्पांसिबिलिटीज नेसेसरी फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस। ये नियम देगा आपको प्रोवाइड सेफ, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें उसको एक सही माहौल, सेफ माहौल और इफेक्टिव माहौल। नेक्स्ट है सर प्रिंसिपल्स, उसूल के आगे प्रिंसिपल्स के उसूल में रिस्पांसिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हम लें इस चीज से करने का, असर्टिवनेस हाँ करें, अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी हो, assertiveness is positive thinking, positive thought, positive behavior, accountability is responsibility, और authority मतलब हमको डिसीजन लेने का हक हो, कोई भी डिसीजन हो हम खुद से वो डिसीजन ले सके चाहे वो जैसा भी डिसीजन। नेक्स्ट स्लाइड, responsibility, the state or fact of having a duty to deal with something or of having control over something। state और fact ये क्या है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती क्या है, ये वो सच्चाई है कि हमारी ड्यूटी है कि किस चीज से हम डील करें इस तरह से ताकि उस पे पूरा हमारा कंट्रोल हो, या उस आदमी पे या उस एक्टिविटी पे पूरा कंट्रोल हो। असर्टिवनेस क्या बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है, एंड फोर्सफुल बिहेवियर बताता है कि हम असर्टिव हैं यानी कि आपको ये काम कराना है तो फोर्सफुल बिहेवियर से आपको ये काम करा लेना है, कंप्लीट करा लेना है। अकाउंटेबिलिटी है रिस्पांसिबिलिटी, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग अकाउंटेबल इज रिस्पांसिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है आपकी, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। अथॉरिटी क्या है कि पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स ओबीडियंस, ताकि ओबीडियंस के एनफोर्स कर पाए कि जो काम जिसको जिस तरह से करना है उस तरह से करें। ठीक है, नेक्स्ट लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस। आप वीडियो दिखाइए, वीडियोस नाउ वी शुड सी द वीडियोस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। दो तीन वीडियो चला दीजिए अलग अलग सब तीन वीडियो की चला के दिखाओ। The world we live in is changing fast. Every day, we are becoming more globally connected, developing technologies and systems, and dealing with new opportunities and challenges. The world today looks very different to 20 years ago, and it is constantly evolving. Change, complexity, and uncertainty are a normal part of life. From the way we communicate, to the types of jobs we have, to the way we think about our identities and societies. Education plays a very important role in this fast-changing world. Meet Miss Naledi Maklad, a grade 1 teacher. I love my job so much, but I constantly worry about whether I am doing enough to prepare my young learners for the future. They are exposed to so much information every day. They are able to interact with knowledge and people from all around the world through the internet. How can I teach them to navigate this world successfully? I've even heard that most jobs in the future will be jobs that don't even exist right now. How do I prepare my learners for this? Teacher Naledi is not alone in her concern. She is right to be thinking about the kinds of skills and knowledge that young learners need for future success. I believe that it is more important than ever to equip young learners with excellent literacy skills. I know this is important because if my learners can listen, speak, read and write with fluency, understanding and confidence, this gives them the foundational skills to learn anything. I am also sure that it is still important to equip my learners with mathematics skills and knowledge. And I think it is good for young children to learn some content knowledge about their world. But this is not enough.
I know there are other things that my learners need to develop in order to succeed in this new world. The development of competencies for a fast-changing world can be developed together with subject knowledge. Together, they can form one integrated program. Let's see how Teacher Naledi does this by implementing a structured literacy program that develops listening and speaking, phonemic awareness and phonics, handwriting, group-guided reading and paired reading, shared reading, and writing skills. I follow the same routine every week and I use the same methodologies over and over. This allows me to deliver the lessons in an expert way. The structure and methodologies of my literacy program lead to the development of excellent literacy skills. So, literacy skills are important, but what else do we need to factor into a child's education? As we move into an uncertain future, we need our children to develop the competencies that will ensure they are creative and critical thinkers, leaders, entrepreneurial thinkers, lifelong learners, and socially responsible citizens. In this fast-paced world, understanding and developing these competencies cannot be left to chance. It has become a very important part of every teacher's responsibility to deliberately develop these skills. We use three broad categories for the competencies that we must strive to develop in our learners. The first set of competencies are skills, how we use what we know. There are four sets of skills that we must guide our children to develop: creativity, critical thinking, communication, and collaboration. The second set of competencies relate to character, how we behave and engage with the world. There are 6 character traits that we must aim to develop: mindfulness, curiosity, courage, resilience, ethics, and leadership. The third set of competencies relate to meta-learning, how we reflect and adapt. There are 2 kinds of meta-learning that we must aim to develop: metacognition and growth mindset. In this learning program, we will show teachers how to develop both the traditional skills required for literacy and some of the competencies required for a changing world. These 2 skill sets, literacy and competencies for a changing world, are not taught separately. They work together every day so that children develop the knowledge, skills, values, and attitudes that they need for success. In this series, we examine some of the competencies for a changing world at an appropriate level for young learners. We will also show you how these competencies can be developed through your everyday teaching of literacy. For example, we may show you how creativity is developed in a writing lesson by having students use their imagination to come up with their own ideas for the writing tasks. Or we may show you how collaboration is developed in a discussion lesson. We will also show you that these competencies are developed in young learners through routine and repetition, by doing the same activities over and over again. Let's recap the main points we have covered. The world is changing fast. Education must change with it. Literacy skills are more important than ever. In addition, we must explicitly teach and develop competencies for a changing world. There are 3 kinds of competencies: skills, what we do with what we know;
character, how we behave and engage with the world, and meta-learning, how we reflect and adapt. The skills that we must help learners develop are creativity, critical thinking, communication, and collaboration, also known as the 4 C's. The character traits that we must help learners develop are mindfulness, curiosity, courage, resilience, ethics, and leadership. The meta-learning that we must help learners develop are metacognition and growth mindset. Literacy and competencies can work together and strengthen each other, so that learners are equipped with all the tools they need to navigate a fast-changing world. At first, I thought that teaching literacy and competencies sounded like a lot of extra work. But actually, I soon realized that these competencies are embedded in the language lesson plans. I know that I am now teaching my learners literacy skills and preparing them for the future at the same time. अगला वीडियो दिखाइए। In the area where a lot of technological progress and a lot of transitions and changes at all levels take place, the world becomes a small village where the sites are mingled and cultures are blended. And with the technological evolution, schools and universities are no longer the only source of information. Nowadays, students can find information easily and conveniently through the internet and modern technology, and may access information beyond what is required to know during their study years. In order to keep pace with the rapid development of the educational systems, the educational system should be developed to become more flexible and innovative. Competency-based learning, the most important characteristic of this form of flexibility. Because this system is measuring learning rather than time. These 2 academically outstanding applicants who have the highest degrees of intelligence, one of them is studying in a traditional way, and the other one is studying in a modern way, which competencies mainly adopted. The system helps greatly to education development, as it is not limited to the traditional method of learning, or from the obligation to attend lectures, or abide by the number of study hours. Student can access academic content online, at any time and from anywhere. On the psychological side, it allows the students to eliminate a lot of stress, such as school fees, and the fuss to get textbooks, and taking exams at a specific time that can't be changed, etc. The new modern learning in this system is less cost than the traditional system. It depends on the time of the study, not on the number of subjects taught by student. This system also provides educational support by providing books, links, research, articles, and others online. The system provides the students to choose the test date and timing in accordance with the appropriate time that determined by himself. Thus, the student is forced on gaining information rather than on grades. This method provides interesting learning model and gives the students plenty of time to practice his activities and hobbies, which leads to psychological balance, and that motivate the student to improve and expedite his performance, as it is not related with studying years and passing certain material and articles. Therefore, the student can pass his academic years faster in shorter period, as long as he is fully prepared and efficient to have his educational attainment. In addition, this form of learning helps to choose the material that the student needs to know when studying.
For students who have full knowledge about certain materials, as a result of their experience and previous readings, students can enter exams and tests directly. To apply this form of education, two essential factors is must. The first factor, changing culture, is inherited by breaking the default and traditional educational process of dividing the study to classes, and determine the number of learning hours which cannot be overridden. Compliance with the inflexible lectures timetable and committing to a specific date for the tests which cannot be changed and other traditional methods. The second factor, the need for attention to new technologies that will help to achieve this aim by using sophisticated programs, communication mechanisms, computers, networks and different forms, such as audio, graphics, search mechanisms, and electronic libraries, as well as web portals. Human measured by their mental and cognitive developments, and not their age. Who owns the information has the right to lead, and the most capable for leadership. We must therefore equip minds to acquire greater knowledge about the innovative method. Competency-based learning, the optimal model to learning. Good morning, children. Very good. Good morning, sit all of you. That's great. Wow, energetic good morning. So, today we are going to learn a new topic. Today we are going to learn a new topic. That's great. So, you're so small, right? Will you eat chocolates? You eat biscuits? Very good. You eat lollipops? That's great. You take bath with what? You take bath with what? Soap. So you know the name of the soap? Dettol. Very good. You? Anushka Sarkar? Soap name? Don't know. That's okay. It's okay, baby, sit. So, you know your soap name? Tell me. Soap. Okay, it's okay. Yeah, Dao. Very good. Thank you so much. So, what's your soap name, Arush? Okay. So you know your soap name, you'll be eating chocolates, you know the chocolate name. Yes or no? Very good. Thank you. Thank you so much. Yeah, very good, children. Yes, thank you. Thank you. Yes. Now, eyes on the teacher. Lock your hands on the page. That's good. Great. Zareen. So today you are going to learn a topic called competency. What is it? Competency. What is it? It's not competency, it is competency. Look at the board. What is it? Come again. Very good. You know the name or word competency. What is the meaning of competency? What is the meaning of competency, children? Shall we know the meaning first? Yes, very good. See, competency means ability to read. Ability to read. Ability to read. Very good. That's fine. What is it? Ability to read. Very fine. That's great. So, today's topic name is competency. What is the topic name? Competency, and the meaning of the word is ability to read. What is the meaning of the word competency? Ability to read. Very good. So why ma'am is teaching you competency? You don't know how to read? You know, right? Do you know or not? Yes or no? Now let me see how many of you know how to read. Tell me, what is this? Munch. What is it? Perk. What is it? Very good. Now, I want to tell you, this product name is Perk. What is the product name? That means the chocolate name is Perk. The chocolate name is
chocolate name is? So, we call it as product name. We call it as? Very good. So, Perk is the product name. Perk is the? Very good. Now, if you observe very keenly, here you can see with small letters some other word. Some other word. That is Cadbury. What is it? What is it? Very good. Now I told you Perk is the product name. Which is the product name? Which is the product name? Perk. Very good. So, now I told you other name, right children? What is the other name I told you? Cadbury. What is the other name? So why we are calling it as Cadbury and why the pack is having other name as Cadbury? So this name is the product name. This packet name is Perk. So here we have Cadbury. It's nothing but brand name. What is it? What is it? Brand name. That means a big company. What is it? A big company is making all these chocolates. Making all these. So they have printed their company name, very small letters, and named it Cadbury. What is it? Cadbury. Here you can see the brand name. Here you can see the. So Perk's brand name is, what is the Perk brand name? What is it, Akshaya? Cadbury. Very good. Sit. Thank you. How to see the? See this soap. What is the name of the soap? What is it? For what we use this soap? Cups. For washing clothes. We use this soap for washing clothes. For washing clothes. Yes, very good. So, now see here, you can see the number here. One number. And there is a symbol like this. Do you find this symbol, children? Yes or no? So it means it is the rupees. That symbol means rupees. Nothing but cost. Nothing but cost. So how much is the soap cost? What is it? What is it, Namish? 27. Very good. The cost of this soap is? The cost of this soap is? Very good. Now I will call few kids here and I will ask you which is the brand name of some products. You should be able to tell them. Okay, children, are you ready? Everyone. Now, Alina, Arush, Akshaya, Janvi, Pranil and Zareen. Now they are going to tell which product name is Munch and what is its brand name. Okay. Now I ask Arush, which chocolate is Munch here? Munch. Very good. Take it out. Show to them. Okay, that's great. Now tell me what is the brand name on it. You can read the spelling. Brand name. Yeah, very good Akshaya. You're helping him. Read it aloud. Yes? Yes, Nestle. What is the brand name? Nestle. T is silent. Yes. What is the brand name? Nestle. Very good. So what is the brand name for the chocolate Munch? Nestle. That's good. Now, I want Akshaya to tell the cost of this package. What is the cost? 10 rupees. Is it 10 rupees? Show me the cost. Wow, that's good. Very good. Keep it there. Very good. Now, Anvi, where is Dairy Milk chocolate? Wow. What is the chocolate name? What is it? Very good. Now, what is the brand name? Brand name with small letters. See that?
Yeah. What is it, Pranil? ब्रांड नेम क्या लेना है, प्राइस कितना है, Cadbury. What is the brand name, Janvi? मार्क बार जानना है. Wow, that's good. You know the brand name and the chocolate product name now. Very good. Now, I want Pranil to show me which is Maggie here. Maggie. Wow. Is that Maggie packet? You love to eat Maggie? Your mother makes Maggie? Yes? Okay. Now, what is written here? Is Maggie is the product name or brand name? Brand name. What is it? Maggie is the brand name. The name of the packet is 2-minute noodles. What is the name of the packet? And the brand name is Maggie. And the brand name is? How many of you like to eat Maggie? Wow. Even I like to eat. Even I like to eat. That's good. But is it a good food, children? Yes or no? No. So you should not eat every day. Just once in a while. That's great. Now, what is the chocolate name, Yashnil? Chocolate name. What is it? Dhruv, what is the chocolate name? 5-star. Very good. Harshil, what is the chocolate name? Perk. What is it? Perk. What is it? Trilokya, what is the chocolate name, product name? Tell me. What is it? Kit Kat. Very good. Tushita, what is the product name? Punch. Wow. And here, Atish, what is the product name? Dairy Milk. Who will tell the brand name? Anyone? What is the brand name? Tell me. Brand name. Cadbury. Is it Cadbury? Yes. Wow. Very good, Dhruv. What is the brand name? Yes. Now, who will tell the cost of the chocolate? Cost. Tell me, what is the cost? 5 rupees. What is it? Very good. Now, who will tell the cost? Tushita, tell me the cost. Okay, very good. Give claps for them, children. Keep the things over there. Keep the things over there and make a move. Yes, thank you. Now, what is the topic we have learned today, children? What is it? Very good. Competency. What is the meaning of competency? Ability to? Ability to do it. Very good, Janvi. Very good. Very good. So, now you have learned to read the product name. Yes or no? Brand name. And also the cost of the thing. And also the cost of the thing. So, now you can read. When you go to shop, will you read the cost and brand name, children? Yes, you can see the date, manufacture date. That you will learn in your higher classes. Okay. Thank you, children. Thank you so much. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये. इससे बच्चों को नॉलेज होता है कि ब्रांड नेम क्या है, प्राइस क्या है, किस कंपनी की चीजें वो ले रहे हैं, कौन कंपनी बना रही है, बहुत सारा नॉलेज उनको होता है. और इससे आगे भी उनको सीखने का इच्छा होता है कि आगे भी बहुत सारी चीजों के बारे में इस तरह से वो जानते जाएं. ये बड़ा अच्छा सिस्टम है. और अब जो है हम आपको एक एक्टिविटी कराएंगे. 15-20 मिनट की एक्टिविटी. आपको खुद लिखना है. आपका अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या करना चाहते हैं, बस ये लिख करके हमें बता देना है. आप सोचिए, अपना सब्जेक्ट लिखिए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह का ये वीडियो देखने के बाद उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को लिख करके हमें बताइए. क्या अभी नहीं. हाँ, लीजिए. ये लीजिए मैम. ये लीजिए. ये लीजिए. ये लीजिए.
क्या बोल रही हैं मैम, शाइन मैम? कितने टाइम में इसको करना है सर? ये 20 मिनट टाइम है आपके पास। 20 मिनट में आप लिख करके बता दीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट को कॉम्पिटेंसी बेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने वीडियो देखा अभी, कितना अच्छा उस बच्चे को पढ़ाया उसने, आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकती हैं अपने सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में किस तरह से कर सकती हैं। 20 minutes time. बीस मिनट टाइम है, आराम से आप उस पुस्तक में लिखिए, ठीक है।
15 मिनट है, फिर आप आपस में सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करके भी कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को आइडिया दे करके भी डिस्कशन करके भी आप हाँ पूछ सकते हैं आप उसके सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बैठ करके पूरा सही से डिस्कशन करके भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट सही आना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए बस।
से अच्छा पूजा मैम कर रही है, आप लोग भी करिए सही से। हाँ पूजा मैम भी करेंगे। आशीष सर कंप्लीट हुआ, आराम आराम से करिए, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, कोई टाइम बाकी है।
टाइम इज ओवर फॉर दिस एक्टिविटी। अब आप लोग अपने अपने पेपर जमा कर दीजिए, फिर इसके बाद हम देख करके बताते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने किया। Everyone is done at its best thing. Best one is done by Rosie ma'am. She has drawn the flowers, the names of different flowers, and the original flowers will be brought to the class, and the students will be reciting, seeing the names of the flowers, so that they can remember it forever. Good, बहुत अच्छा रोजी मैम, आपने सबसे अच्छा किया। अगला स्लाइड, levels of competency, level 1. Behavioral competencies related to operational work performance and have to meet the demands of the workplace. Workplace में जहाँ काम हो रहा है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई जॉब हो, उस प्लेस में जो डिमांड है उसको अगर पूरा कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेशनल वर्क परफॉर्मेंस कहेंगे। ठीक है, दैट इज बिहेवियर का कॉम्पिटेंसीज है। एडेड कॉम्पिटेंसीज क्या है, बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड एडिशनल नॉलेज। ग्रुप के बिहेवियर पे और उससे ज्यादा नॉलेज पे इस डिपेंड करता है, लेकिन इम्प्रूव वर्क, ये इम्प्रूव काम को और ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड कॉम्पिटेंसीज। इंटीग्रेटेड कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये सब एक साथ मिलकर करके करते हैं। ठीक है, दैट सपोर्ट चेंज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग कंडीशंस। नॉलेज, स्किल, नॉलेज, वर्किंग कंडीशंस नॉलेज को चेंज करे, स्किल्स को चेंज करे, अंडरस्टैंडिंग आर इंटीग्रेटेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क कंडीशंस। जो भी समझ है एक दूसरे की, वो इंटरनल वर्क कंडीशन के मुताबिक इंटीग्रेट किया जा सकता है, बाहर के वर्क कंडीशन के मुताबिक भी इसको इंटीग्रेट करके एक साथ किया जा सकता है। लेवल 4 क्या है, कंप्राइजेस होलिस्टिक कॉम्पिटेंसीज यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम। अलग-अलग अप्रोच है इसका। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग-अलग अप्रोच हम लेते हैं, जिसमें होलिस्टिक में and based on identified needs, क्या जरूरत है हमको, क्या रिजल्ट है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस आना चाहिए, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके मुताबिक ही हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डेवलप्ड बाय हु ने एक डायरेक्शन डेवलप किया है किस चीज के लिए, टू इंप्रूव द हेल्थ फॉर सब लोगों का हेल्थ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इनक्लूड्स 5 की इंटरवेंशंस एरियाज टू इंप्रूव नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सर्विसेज। नर्सिंग को सर्विसेज को और मिडवाइफरी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं। क्या है वो, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हेल्थ और ह्यूमन क्या ठीक करने की प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ पर्सनल, जो हेल्थ पर्सनल है जैसे डॉक्टर्स हो गए या ये हो गए, उसको मैनेजमेंट, प्रैक्टिस एंड हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट, किस तरह से प्रैक्टिस करें और हेल्थ सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। एजुकेशन ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, इन लोगों का पूरा उस फील्ड में एजुकेट करें। लीडरशिप एंड गवर्नेंस, लीडरशिप इनके अंदर आए और गवर्नेंस आए, इस तरह से गवर्नेंस। कैरेक्टरिस्टिक, एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल। ये हमने बताया आपको पहले ही कि कॉग्निटिव मींस हेड, साइकोमोटर मींस हैंड एंड अफेक्टिव मींस हार्ट। इसको एक्विज करने मतलब इसको एक्वायर। कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, मतलब कि इसका कैरेक्टरिस्टिक गुण ये है कि ये सारी ट्रेनिंग के बाद क्या है, किसी क्या कुछ चीज एक्वायर कर ले, हेड मतलब सही से अंडरस्टैंडिंग उसका हो जाए, कॉग्निटिव एक्विजिशन, साइकोमोटर एक्विजिशन मतलब क्या, अगर वो अपने काम को करे तो किस तरह से करना है वो पूरा उसमें वेल प्रैक्टिस हो जाए। और स्किल में इफेक्टिव का मतलब कि बाय हार्ट वो ठीक रहे, इंसानियत उसके अंदर हो। कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, broadly based competency development derived from the best professional evidence, current standards and regulations. Authentic assessments which are valid and reliable. Assessment ऐसा होना चाहिए जो valid और reliable हो। इसको समझे कि ये चीज जो किया गया है, ये इसका जो रिजल्ट आया है, ये इसको टेम्पर तो नहीं किया गया है, reliable होना चाहिए और valid होना चाहिए। The use of
एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स, एडल्ट को लर्निंग का प्रिंसिपल्स का कैसे इस्तेमाल करें ये चीज होना चाहिए। इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। अगर लर्निंग स्टाइल और एबिलिटी इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप का है, उसको पहचानना जरूरी है और उसका एप्रिसिएशन जरूरी है, ताकि उसके अंदर और आगे कुछ नया करने का और ख्वाहिश हो। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सीईई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे जरूरी है एलिमेंट्स क्या क्या हैं। फोकस ऑन आउटकम रेदर देन प्रोसेस। हमको ये नहीं देखना है कि प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। बाय व्हाटएवर मीन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, डोंट बॉदर अबाउट दैट, द आउटकम शुड बी द बेस्ट। जो हमको रिजल्ट चाहिए वो चीज आ जाना चाहिए। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट व्हेन आउटकम इज कंसीडर्ड। जब आउटकम देख लेंगे हमको जो चाहिए नतीजा वो चीज मिल रहा है, तो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। Develop based on expectations. Results are used to adjust the experiences, learner and promote competency in specific areas. जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, उस रिजल्ट से हम समझेंगे कि उसको किस प्रोसेस से किया गया है, फिर उसी प्रोसेस को हम दूसरी जगह पे दोबारा इंप्लीमेंट करके दूसरे एरियाज में कर सकते हैं। ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम्स पास होते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। Hello everyone, today we will be studying about educational structure and the functions at different levels, which are center, state, district and university level. This is presented by me Vidushi Rajwar. So now let's start the discussion upon topic. So now let's start with a very famous quotation given by the literature laureate Rabindranath Tagore, which says that the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. इसका कहने का एक तात्पर्य यह है कि सबसे उच्च शिक्षा वह होती है जो न सिर्फ आपको ज्ञान प्रदान करे, परंतु आपको हर परिस्थिति में जीवन शांति पूर्वक जीना सिखाए। The education is something which makes you adjust to your environment and it makes you capable of handling all types of difficulties and obstacles whichever you face in your lives. Now understanding about the academic structure of education. As we know that the education is responsibility of both central and state government, as it is under the concurrent list of Constitution of India. But still, a major chunk of the responsibilities lies with the center, as it has been invested with certain powers according to the Constitution of India. There are several stages of education system of India. These are pre-primary, primary, middle, secondary, higher secondary, undergraduate, postgraduate and doctoral. Discussing these levels of education right from the elementary education, which begins from 6 to 14 years of age. It is the education from level 1 to 8. Then comes the general secondary board examination certificate, which is for 15 to 16 years of age and goes for the 9 to 10th class education. Then comes the senior secondary board exams, which is for the age of students between 17 to 18 and it is for 11 to 12 class. Then comes the university undergraduate program, which is for the age limit from 19 to 21 years generally in India. After that comes the master program, which teaches the master level of education, and then comes finally the doctorate programs. Doctorate degree is the highest level of academic degree for research. It is famously known by name PhD. It is also used for the university level of teaching, and other kind of doctorate degrees are Doctorate of Medicine MD, Doctorate of Education ED, and Juris Doctor JD. Now,
Let's discuss about the Central Administration Authority in Indian education. Ministry of Education is under Minister of Cabinet rank. Presently, it is headed by the Minister of Education, who is the MHRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. He plays the role in formulating the journal policies and ensuring the uniformity in educational pattern. He is assisted by the Deputy Ministers and also the Educational Advisor. Further, he is held by advisory and statutory bodies of the central advisory and statutory bodies which are aiding the central level of education in decision making and formulating of educational policies. Some of these are Central Advisory Board of Education, which was established in 1920, All India Council for Technical Education, which was established in 1955, University Grant Commission, which was established in 1945, All India Council for Elementary Education, which was established in 1957 as an advisory body. Then comes the Central Social Welfare Board, National Board for Basic Education, Central Board of Sanskrit, National Council for Women Education and National Council for Rural Education. This is basically for the upliftment of the vulnerable sections of the society, mainly the women and rural people. At last, there is NCERT, which is the National Council of Research, Education Research and Training. It was established in 1961 as an autonomous body. There are several roles played by the central government for the improvement and upliftment of educational system. Some of these are improvement of teachers' status and teachers' education through the means of NCTE guidelines, development of scholarship programs, utilization of educational opportunities with specific reference to the education of weaker sections of society, provision of free and compulsory basic primary education from 6 to 14 years of age, vocationalization of secondary education and improvement of the status of education, promotion of scientific and technical researches, educational researches, and development of professional education in agriculture and industries, development of higher education with specific reference to the post-graduation, sharing the responsibility for university education, provision of free education up to 14 years of age, advisory and coordinating and harmonizing the educational activities of center and state. Also, it acts as financial assistance to the state government and private agencies. It acts as clearinghouse function to collect, publish educational information. It also provides the leadership in educational thought by conducting several surveys, experiments, researches, and publishing journals. Let's discuss about the education at state level. The present Ministry of Education at state level has its actual origin in 1919. It has been provincial subject since 1921, but under Government of India Act 1935, it was under full control of Provincial State Minister of Education. Education at state level is basically managed by a Chief Minister appointed Educational Minister, who is the head of Department of Education. He is basically assisted by Education Secretary and Director of Education. Now understanding about the education organizational structure at state level with the help of this flowchart. As we know already,
that the State Department of Education is divided into two focal points, which are the Secretariat of Education and the Directorate of Education. Now, Secretariat of Education is handled by the Secretary, who is an IS officer. He is assisted by the Deputy Secretary and few Assistant Secretaries. He is generally connected with the Education Minister and Deputy Minister of Education. Now comes the Directorate of Education. Directorate of Education is the executive head of Directorate. He is the Director of Public Instructions and chosen from the State Educational Services, basically from the experience in the State Department of Education. He is the expert advisor to Minister in the matter of policy framing for education, and he is the highest executive authority in education in the state. There are different types of directorate, as we can see in the flow diagram, and they are assisted by the different deputy and the assistant directors. These are Director SCERT, Director Primary, Director Secondary Education, Director Mass, and we can see that the Director Secondary Education is assisted by the Inspector or the Inspectress of School and Deputy Director. Now let's discuss some of the important stuff to the educational institutions. Then comes the framing and curriculum and syllabus. Framing of curriculum and syllabus includes the length of each course determination, time frame, scheduling of prescribed and working days, working hours, vocation is specified, and even the textbooks are prescribed. Then comes appointing of supervisory staff, which inspects and acts as inspectors and education officers for regulating the activities of various institutes. After that comes very crucial part, which is providing of financial aids. If the institutes are provided with suitable aids and grants, they can run efficiently and very effectively. Then comes appointing of the commissions and committees. Commissions and committees are formed time to time so as to discuss upon the various aspects of education and different kinds of educational activities which could be performed in state. Of the World Bank. It is made in order to achieve the goal of improvement in the basic primary education of India. It is centrally sponsored scheme of Government of India. There are several objectives of District Primary Education Program. Some of these are substantial improvement in the quality of schooling facilities. These facilities could be in form of infrastructural, financial facilities, type of education which is offered to the students, and many more. Then comes the reduction in the disparities. Educational disparities still do exist in our country. It can be in form of the religional based, caste based, gender based, and many more. Then comes the provision of alternate comparable standards to the disadvantaged group. Disadvantaged group are the groups which are not able to receive the education just like the normal people. These can be disabled people, handicapped, who are physically challenged. There are other alternate comparable standards of education mediums. Then comes building up of the local level capacity to ensure that the effective decentralization of educational planning takes place very smoothly. And then obtaining of a genuine community involvement in running of schools.
It is very essential that all the community work together so as to make school run in a success mode. Now we will discuss the various level of education and how are they politically, administratively and technically aided. So first let's discuss about the district itself as we were continuing in the previous slide. District is politically controlled by Jila Parishad. Then the administrative assistance to the district level of education is provided by the district education office and the technical support is given by DIET, that is DIET. Then comes at block. The role of state government, role of our government, and role of districts and role of different entities in this group, how they are just framing to do the best to provide the best form of education for the people of our country. Now the next step will be, no, we are not going to do in the slides. I just give some questions that is based on competency-based education. Whatever you have recapitulated, whatever you have understood after this training, you will have to just write on the answers of this questionnaire. I'll give you 15 minutes time. After 15 minutes, I'll just collect from you and then we will discuss on those points that what you have understood from this training. Okay? Some questions are coming as an online game, and I'll ask them answers, or whoever just can give the answer, please raise your hand and answer the question. Tell me. It is based on this competency-based education, whatever you have understood. On that basis, you have to answer. The purpose of a student. Student assessment in a competency based education system is to, क्या मकसद है assessment का, student assessment का competency based education system में rank students according to their performance, ये purpose है, या determine students mastery and skill, test knowledge and recall of content, give different tests to different students. कौन सा आंसर होगा? जिनको समझ में आए वो बताएं. A, B, C, D. C answer is correct, sir. ये नहीं, determine students mastery है. B होना चाहिए. D is the answer. Students mastery and skills को determine करने के लिए हमारा पर्पस है student assessment का. कि कितना मास्टर हुआ, उसमें कितना स्किल मिला उसे, कितना स्किलफुल हुआ, कितना मास्टर. Next question. Competency based learning means. Competency based learning means. As a person to B कौन सा है भाई? कौन सा बोल रहे हैं आप? फर्स्ट सेकंड उधर से A उधर से है. A B C. कौन सा डेवलपिंग स्किल्स? B. Yes, right answer. Next. ऑनलाइन गेम इसी के बाद क्वेश्चन है. Which of the following statement is incorrect? Correct नहीं incorrect?
नेटवर्क नहीं आ रहा सही ना, नेटवर्क कैसे हो रहा है? मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे आंसर में टिक लगाइए और बताइए। द टाइम विल बी 15 मिनट्स। पंद्रह मिनट टाइम है इसके लिए, 15 मिनट्स लेने क्वेश्चन है। क्लास में क्या लिखा है? क्लास में क्या लिखा है? इस क्लास को बातों में लिख दीजिए, पढ़ती हो तो लिख सकते हैं, है ना? हाँ? नो क्लास।